It's been more than a week that the Aam Aadmi Party has been accusing the Congress of stealing their ideas, or to be more precise, the poll manifestos. Uh, 2, 3 days back, uh, Saurav Bharadwaj, he went up to the extent of saying that the Congress party is now devoid of ideas. To discuss this and a lot more, today we are joined by uh, Mr. Nishikant Mohapatra from Orissa. He's the state president of Aam Aadmi Party and also the national spokesperson. We are joined by Ms. Pratibha Raghuvanshi from Congress and Ariba Khan from the Congress. To begin with, to understand this news in the proper context, when Mr. Saurav Bharadwaj, he says that the Congress party now, what he famously said, that it's devoid of ideas completely. There are people not working at the grassroots, so those the communication, the link between the people and the party is supposedly missing. So, how do you look at this statement, Ariba? Let me start with you. How do you look at this statement? How do you assess this statement? Yeah. So, first of all, this is a pattern that our respected CM and his party has been following since the past 8 or 9 years. Claiming, I will say that claiming that Congress party has copied their manifesto and copied their plan of action or whatever you can say, and applied it in Karnataka is again a part of the same pattern that they follow. Uh, Hypothetically speaking, even if that is the case, even if the manifesto was their invention or whatever, their thing, why were they not able to get even one seat in Karnataka with the same manifesto? If that was the case, why wasn't even one seat, let alone the government? Why wasn't even one seat they could not get with the same manifesto? And honestly speaking, everybody knows the state of Delhi and the state of Punjab. The manifestos were just to, manipulate people into getting votes. The condition of these two states are very evident. Okay, so to get Ms. Pratibha to respond to this, मैम आपको क्या लगता है जब इस तरह के accusations आते हैं सामने? What do you think? How would you respond to this? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर से उभार कर प्रथम पंक्ति में लाने के लिए काम सोचा है, और ये हमारी विचारधारा में है। तो हमारे मैनिफेस्टो में भी इसकी झलक दिखती है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो पिछले 10 साल में, 9 साल में भारत में जो लोगों की स्थिति हो गई है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, यदि स्टेटों में आपको उनसे बाहर निकालना है तो इस तरीके के मैनिफेस्टो आपको लेकर आने पड़ेंगे, और वही कर्नाटक में हमने किया। तो मुझे लगता है, जैसे कि मेरी साथी कलीग ने कहा कि हमने किसी का कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा यदि होता तो मैं उनके विचारों से सहमत हूँ कि कर्नाटक में या दूसरी जगह भी आपको सीटें आई होती। जहां तक दिल्ली और पंजाब की बात है, हम सब ने देखा दिल्ली में किस तरीके से पहले सुनहरे वादे किए, और आज लाइट की और पानी की क्या कंडीशन है, किस तरीके से लोग एमएलए के यहाँ दुकान लगाते हैं सुबह सुबह जाकर के, भैया आप लिख दीजिए कि हम बीपीएल के नीचे आते हैं। जब तक आपके एमएलए उनको इस बात की अश्योरिटी नहीं देते, उनके बिजली के बिल जो है वो पुराने जैसे आने लगे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि काम किसको करना आता है और शासन किसको चलाना आता है। Okay, so Mr. Nishikant, how would you respond to this? What makes you? I mean, obviously, taking this debate forward, certain schemes are obviously similar. If you see in terms of Siddharth, there are two factors. One is about the manifesto, its making, its content, its copying. And another factor is scoring in the elections or the result in the election. What both the panelists told, that to some extent, I don't know to what extent they will be agreed, that in India, for the first time, making educations a primary poll bank, making hospitals
a primary coal plant, making, monthly allowance to the women, free water, free electricity as a central theme to your mobilizational strategy, and, manifesto as the key to engaging the public. It all started with Aam Aadmi Party. I was, while doing my research in JNU, once I was working on manifestos of different political parties, and you will be surprised when I visited to different political parties to gather their manifestos. Many of the parties didn't have their manifesto, at that time. They promised in the elections, oh, somewhere it will be lying. We don't know what is the manifesto. That was the standard. That was the, perception about manifesto, that it's a mere promise, nothing else. For the first time, we ensured that we will be accountable to our manifesto, we will make others accountable to their manifesto, and one by one, whatever promises we have done, we'll fulfill it, and we'll also make accountable others. In the process, it is not only about Congress party, even BJP, other political parties. What we have seen in Odisha, I am saying this, Biju Janata Dal also, there is a tremendous change in manifesto making, manifesto promises in the manifesto, and putting accountability on it. Three things to that extent. Number one, never before this prime content: education, health, water, electricity, and employment allowance. These five things we have brought in our manifesto, as we believe that a common citizen in this country will be better served if these five things are provided, and free of cost, of course. On that, Okay, we see the Karnataka manifesto, we see the Gujarat manifesto of the Congress, even we see the Himachal Pradesh manifesto of the Bharatiya Janata Party. Various manifestos, they talk about education, they talk about monthly allowance to the women, they talk about free electricity, they talk about free water, they talk about free movement of women in buses, all these things. So we can at least claim that we made these issues popular and election worthy. After that, whatever others can say, but I will say that the credit goes to Arvind Kejriwal ji, who for the first time emphasized on it instead of caste, class, reservation, all those issues which are very much part of our political discourse. But for the first time, a party came and put complete emphasis on governance that matters to the common man, that matters to the public. And on that basis, we can safely say, if the Karnataka discourse was fought on water, electricity, women, free travel of women, allowance, unemployment allowance, all that things, I think there is no denying the fact that other parties are also learning from AAP's manifesto. And as we promised, we are here to change the politics to some extent. That is definitely. And the other parties' electoral performance, I think one electoral performance. I was just coming to it. Okay. So Ariba, I was just coming to it. So Ariba, if you are to keep the electoral performance aside and just to take the manifesto per se, so obviously you have to accept the fact that if there are certain similarities in terms of the manifesto from the AAP manifesto and the Congress manifesto, there's a realization that what the AAP is trying to achieve, these are actually problems that are existing in the ground, and it needs to be sorted. So, in fact, if there is a realization of that sort, that's why it finds mention in other, manifestos of other parties. I mean, this is very apparent, right? लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 10-12 साल को समझने की भी आपको जरूरत है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार किया गया है, तो लोगों में विजिबिलिटी ज्यादा है।
और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनता के बीच जाकर मैनिफेस्टो बनाया है और उसके हिसाब से पॉलिसीज लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 10 साल या की बात यदि हम करते हैं, तो जिस तरीके की आर्थिक नीतियां हमारे देश की रही हैं, कोरोना महामारी का काल हो, इसने हमारे देश में बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नीचे गिराया है। और जब आप नीचे गिराते हैं, आप मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी तो है ही यहाँ पे, बीजेपी ने जिस तरीके की नीतियां देश में लागू की, उसका असर प्रदेशों में भी आया। आज गरीबी रेखा से जहां एक तरफ मनमोहन सिंह जी ने लोगों को ऊपर उठाया था, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। जब आप जनता से बात करते हैं, तो वोट देने का अधिकार जब सबको है, तो सरकार के द्वारा प्राप्त सुविधाओं का अधिकार भी सबको होना चाहिए। आज बेसिक मूलभूत सुविधा जो राजधर्म होता है हमारी सरकारों का, यदि आप अपनी जनता को वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर सरकार चलाने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में जो गरीबी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप लोगों को किस तरीके से सहायता पहुंचा पाएंगे? आप बिजली के बिलों में राहत देकर पहुंचा सकते हैं, महंगाई कम कर कर दे सकते हैं। तो इसके पीछे एक सोच है कि व्यक्ति को समानता का अधिकार के साथ साथ अपने जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर भी काम करना पड़े, इसलिए हमारे इस तरीके के मैनिफेस्टो आए हैं। Actually, it will be very naive to tell that once BJP came, unemployment came, and once BJP महिलाओं के लिए सुविधा, दिक्कत बढ़ी है बीजेपी के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये नहीं था। बिल्कुल आपका जैसे मतलब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन ए नेगिंग प्रॉब्लम इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। एजुकेशन, कांग्रेस ने जब प्राइवेटाइजेशन, व्हेन वी स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन टू strengthen education rather than that ruined government education, and for the first time we told that we are against it and we'll just strengthen government education. Till now the trend was everybody was behind private education, how to get a seat there, all that things. Making government education majestic, competent and better than private education is a original thinking of Arvind Kejriwal. You can't denounce that. It has nothing to do with BJP or Congress. It is certainly has something to do with a long-term negligence of education. Similarly, unemployment, nobody, there are unemployment. I'm not agree, brother. I'm not agree with you. No, I'll be coming back. Pratibhaji, you will be responding to me. Unemployment issue, at least, has been a problem in India, and no government till now has given a full proof or, complete considerate plan to reduce unemployment. It has been piecemeal. Whether you are, giving these MGNRE or XYZ, it's just pittance. We don't have an employment policy for the youth of India till now, where it is composite, complementary to the requirement and diversity of India. I don't find if you will be having the employment policy which talks of how this diverse. Yeah. So Pratibhaji, if I was to intervene, since most of these poll manifestos, what was mentioned in AAP manifesto finds mentioned in the Congress manifestos in other, especially in Himachal and Karnataka, those states which were poll bound. So there is a realization that what the Aam Aadmi Party has been actually promising in the manifesto, these are actually issues very critical to the public. These are issues which needs to be addressed. So there is a realization, right? Realization तो है, you can't deny the fact. रियलाइजेशन बिकॉज तकलीफ नीचे से आ रही है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो उनको तकलीफ है इस बात की, तो रियलाइजेशन है, इसीलिए मैनिफेस्टो में on the same point, Pratibha ji, there's a realization that these promises, or rather the poll manifestos which were made, these are actually issues arising from the ground. These issues needs to be addressed. Then why there was a attempt in Delhi to say that when Aam Aadmi Party initially introduced this manifesto, saying that these were very poorly crafted, these are not going to these are not going to be successful, these are freebies,
So why was there an attempt? If there was a realization that these are actually what needs to be done on a more रियलाइजेशन एंड holistic level. इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर बहुत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और ग्राउंड रियलिटीज आप मुझसे बेटर जानते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन चुनाव के पहले घोषणा करना, मैनिफेस्टो में लाना और इम्प्लीमेंट क्या है उसका, इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हिमाचल में जो प्रॉमिस लिए उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया, और कर्नाटक में हमने जो प्रॉमिस किए उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में जब हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने कहा था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। बात ये है कि आज जब आप प्रतिभा जी, मुझे एक भी बात बता दीजिए दिल्ली में हमारा जो मैनिफेस्टो में था और हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि 8 साल का सरकार है। मुझे एक इशू बता दीजिए। बिजली देने की बात कही, और मैं दिल्ली में जिस घर में रेंट पे रहती थी, वहां हमारा बिल सडनली, जो पहले 1-2 महीने कम आया, सडनली बढ़ गया। कहते हैं कि आप लोग इसमें आ नहीं रहे हैं, आपका जो ओनर है यहाँ पर, देन आप विधायक से लिखवा कर लाइए। कई लोगों के साथ दिक्कतें हुई, आपने उसको फिल्टर करना शुरू किया। आई अंडरस्टैंड दैट। एक मिनट सुन रेंटेड लीजिए, हाउसेस के साथ नहीं, प्रतिभा जी, एक मिनट सुन लीजिए, इसमें दो चीज भी है जो पहले आप जस्ट मेरा सुन तो लीजिए। मैं आपको टोक नहीं रही थी, आप मेरा सुन लीजिए। नहीं, मैं भी टोक नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं जहाँ जेंटल रह रही डिस्कशन थी, कैरी ऑन। सडनली वहां पे कई ऐसे लोगों के घर थे जो खुद ओनर भी हैं। उन्होंने कहा 1-2 महीने आया, देन सडनली बिल बहुत इंक्रीज होकर आने लगे। परसेंटेज आप भी रियलिटी जानते हैं, आप उड़ीसा में बैठे हैं, सिद्धार्थ भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं पानी के किन घरों में आप मुहैया करा रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। किस तरीके से 6 महीने बाद कॉलोनीज में रेट इंक्रीमेंट हुआ, किस तरीके से पॉलिसीज चेंज हुई। आपने फिर कभी कह दिया कि नहीं, ये तो विद्युत की पॉलिसीज हैं, उसमें करना है। तो केवल वोट मैं लेने के चाहता लिए हूँ नहीं, सिद्धार्थ जी इस पर कमेंट रखे, अगर दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि आई एम ए फ्रिक्वेंट विजिटर सिद्धार्थ जी के दिल्ली, बिजली का और बिल मेरे पार्टी की तरफ से तो मैं बोलूंगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, रेंटेड हाउसेस के साथ कुछ दिन था, उसके लिए भी डिफरेंट रेंटेड के पॉलिसी साथ आया। साथ जो ओनर्स भी आ रहे थे, उनके साथ भी सबसे हम लोगों की बात होती थी। मैं जिस फ्लैट में रेंटेड थी, मेरे पास सारे ओनर्स थे, सबके यहाँ ये इश्यू आए। छोटे छोटे घर है, मुखर्जी नगर में जाकर आप बात कर लीजिए, कई जगह प्रॉब्लम है। आप तो चूंकि उस पार्टी के प्रवक्ता है, आप नहीं, उसको ये बात एडजस्ट नहीं नहीं। करेंगे, हाँ, बट जो फेस कर रहा है उसको 85% 85% आप अब बहुत अच्छी बात करते हैं। आप जाते क्या करते हैं, केवल एक प्रचार प्रसार करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक सुंदर दिखता तो वीडियो बना देना। इस कॉलोनी में नाम पर केवल बोर्ड है, कोई डॉक्टर नहीं आता, कुछ नहीं आता। बात डिलीवरी सिस्टम की है। देखिए, विचारधाराएं अलग अलग होती है सरकार जीतने के बाद, प्रतिभा लेकिन जी, देखिए आप कमिटमेंट हमने कर रहे हैं। हमने दिल्ली में एक डिलीवरी सिस्टम खड़ा किया, हमने दिल्ली में डिलीवर किया। इसके कारण जनता ने बार बार मोहर भी लगाया है। और सेकंड बार दिया आपको कांग्रेस का होगा, और जीरो अब जनता अकाउंट जो है, समझदार हो गई है। नहीं, कांग्रेस का जो जीरो अकाउंट है अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। दूसरा बात कि जो प्रोजेक्ट, जो पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, कहीं पे कमी रह सकता है, एक दो। मैं नहीं बताऊंगा कि इट्स 100% फुल प्रूफ हो गया, सारे लोगों को मिल गया। जैसे बीच में कुछ लोगों का बिल बढ़ के आया था, उसको भी सीएम ने डायरेक्ट उसको एड्रेस किए थे, तो ऐसा होता है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है हमारा आइडिया में, हमने जो बिजली का बात उठाया, अब 300 यूनिट या 200 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का सारे का मैनिफेस्टो में ये पार्ट है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबके मैनिफेस्टो में ये पार्ट है। इवन कोई भैया, 100 यूनिट का बात, बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम पे नहीं थी ना, सरकारें सब्सिडी देती थी केंद्र में, जब तक कांग्रेस की थी। गैस नहीं, की टंकी इतनी महंगी नहीं ये आती थी, कॉन्सेप्ट यूनिट थोड़ा इतने बड़े नहीं सब्सिडी, थे। प्रतिभा जी, लेट मी एक्सप्लेन। ये कॉन्सेप्ट सब्सिडी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा दूसरा है। हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं 200 यूनिट्स का, हम पूरा डिलाइट्स को देते हैं कि everybody is entitled for it, and more than that whoever will be using will be paying. So it's a matter of right, it's a citizenship right कि आपको पानी, ये एक लिमिट तक जो एक परिवार के लिए जरूरी हो जाता है, उसके लिए नेसेसिटी हो जाता है, वो मैनेज करने के लिए उसको जरूरी हो जाता है, हम उसको देंगे। नॉट कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं। हाँ, ये जो राइट है, I'll just intervene here, Mr. Nishikant. Obviously there is an acceptance that these are all public goods which has to be given, right? I mean, they're to a certain level. But when your chief minister yesterday, when he was in Rajasthan, he was addressing a rally. So he made a statement saying that
our health scheme, the Mohalla clinic that we are currently undertaking in Delhi, this is much better than the insurance scheme that has been given by the Rajasthan government. So when you begin to compare, schemes, when you begin to compare schemes and saying that my scheme is better than the other, so don't you think there's a fundamental problem in this? No, there is no fundamental problem. There is a very essential ingredient in it. In our state, in Odisha, there is a scheme called Biju Patnaik Swasthya scheme or something, where you get 5 lakh to 10 lakh for a man, 5 lakh for women, 10 lakh, up to 10 lakh. People get it. No, but But where is the hospital? Where is the if hospital? I'm if the coming to that. Congress, I'm coming to that. When I say that I will be giving you the hospital, the Mohalla clinic, the treatment, then it is a physical embodiment. You have to have it. right. When you tell I will give you an insurance, then you presuppose that there are sufficient number of hospitals are there, doctors are there, and you use this insurance. Whereas my problem is that there are insurance with the public, the common man, but there is not sufficient hospitals to use that insurance, to encash that insurance. You know, in Odisha, to encash the insurance, the public has to travel 100 kilometers, 50 kilometers, 200 kilometers, 300 kilometers. So that's the point where we are questioning that without sufficient infrastructure, when you talk of insurance, then it is, it is insurance in your hand, but in practice, you don't get the service. That's the point. So would you respond to this, Ms. Pratibha? What he is saying, he's basically saying that the first level of, the fundamental, the link, that is missing. So once that is missing, the other, when you say insurance and other. मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल राइट्स तो कहीं मिसिंग है. यदि ये सब होते तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सरकारी हमारे देश में नहीं होते. ये इतने सालों में सरकारें कांग्रेस की रही हैं और सब किया है. मेरा केवल ये है कि प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, आप खुद दिल्ली की जनता से पूछिए या आप जहां रहते हैं उधर देखिए मोहल्ला क्लिनिक के क्या हाल है. यदि कोई व्यक्ति अपना इलाज कराना चाहता है, तुलनात्मक अध्ययन दोनों तरीके से हो सकता है. हर एक प्रदेश की संरचना अलग होती है, लोगों को जरूरतें अलग होती हैं. लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नहीं, केवल आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सेवाएं देता है, आम आदमी पार्टी ने बेसिक ये चीजें शुरू की और उसको कॉपी. It's not about party, Pratibha ji. Let us get into agreement that it's not about Aam Aadmi Party or Congress or BJP. It's about how many hospitals we have for what population. आप बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन कितना है? मेरा स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट है. ईच डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है. आप वहां जा रहे हैं, बात वो नहीं है. बात राजस्थान की पॉलिसी से कंपैरिजन की है और मोहल्ला क्लिनिक की है. मोहल्ला क्लिनिक में क्या आप सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है? क्या मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोग वहां पर अपना इलाज करवा पा रहे हैं? एक घर में कोई परिवार में आवश्यकता पड़ती है और वो आपकी मोहल्ला क्लिनिक पे जाती है, पता है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कम से कम उनको ये तो मालूम है कि दूसरी जगह अस्पताल में डॉक्टर मिल जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होंगे, इलाज की सुविधा हो जाएगी. देखिए, बात वो नहीं है. जहां एक चीज है प्रतिभा जी, ये मोहल्ला क्लिनिक को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट कर लिया है वेलनेस सेंटर के माध्यम से. दिल्ली में 13 डिस्ट्रिक्ट है, सब कनेक्टेड है, जाने आने की समस्या नहीं है, दूसरी जगह प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक राज्यों का जो बसावीकरण है वो बहुत अलग अलग है, तो हमें उसको भी समझना पड़ेगा. आप केवल इसमें जाने आने के नहीं प्रतिभा जी, इट्स नॉट मैटर ऑफ डिस्टेंस, इट्स मैटर ऑफ स्केल. आपका जो जिसको खांसी भी है, अगर वो एम्स में लाइन लगाएगा दिल्ली में, तो एम्स का कार्य प्रभावित होगा. अगर एक मोहल्ला क्लिनिक हो जाता है, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ना मोहल्ला क्लिनिक में जो आप प्रचारित करते हैं. कहाँ अवेलेबल है? एक केवल मोहल्ला क्लिनिक बताकर लोगों को आपने यूज कर लिया उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने खुद उड़ीसा से बहुत सारे टीम लेके गए हैं मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए. आपको जब दिखाना होता है, प्रचार प्रसार करना होता है, बात नहीं है. आप थोड़ा पार्टी से निकल के इस पर बात कीजिए तो आपको पता चलेगा. पार्टी की
से नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ पिछले कि यदि आप साल मैनिफेस्टो 1.5 में चीजें करोड़ लेकर लोग आते हैं तो मोहल्ला आप उसमें क्लिनिक में इम्प्लीमेंट करिए। ट्रीटमेंट केवल लिए। 50,000 में करोड़ों का पैसा दिल्ली की जनता का लगाकर आप उसको कह रहे हैं नहीं वो सही है और सिद्धार्थ जी, राजस्थान की गवर्नमेंट गलत पिछले है, ये साल सही नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ लोग दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का ट्रीटमेंट अवेलेबल किए हैं। ये सरकारी आंकड़ों में आपके पास मौजूद होगा। आप अपना आंकड़ा ले आइए, आप अपना प्राइवेट आंकड़ा ले आइए कि कितने आदमी वहां पे गए हैं। मेरा सरकारी आंकड़ा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट हमारा है। आप अपना आंकड़ा दे दीजिए कि कितना तो मोहल्ला दिल्ली की क्लिनिक में जनता मुझसे डॉक्टर नहीं है। बेहतर जानती है कि Okay, मोहल्ला so क्लिनिक में क्या just है। to so just not to divert too much from the discussion. बट So I mean, Pratibha ji, there is an acceptance that what he is saying, that most of these poll promises that have been made by the Congress, be it your free bus scheme for the women, or free electricity to up to 200 units, or drinking water, and और so on and so forth. 2,000 to women They, or yeah, to the monthly allowance. allowance to women, allowance to the women. So there is an acceptance that these are public goods, and these have to be delivered. So that is why the Congress government in Himachal, or in जरूरत Karnataka now, है और they, इसीलिए दे रहे हैं, और जब सरकारें बनती हैं तो डिलीवर भी कर रहे हैं। बेसिकली आप उस दर्द को समझिए ना, जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, जो बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बसों में अपना सर्विस करना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे एक दिन का कारण नहीं है ना बॉस। बहुत सारे कारण हैं जो आज ये स्थिति आ गई है कि इसके पहले बिजली का बिल इतना नहीं आया करता था, यूनिट्स के रेट इतने नहीं हुआ करते थे, सब जगह चीजें थी। तो आज की परिस्थिति में हमें देखा कि ये जरूरत है तो उस पर काम करना शुरू किया। अब आप okay. उसको So केवल एक yeah, चीज लेकर बैठ okay, जाएंगे कि नहीं केवल आम आदमी पार्टी ने किया इसलिए हम करें, दिस इज नॉट राइट। हो ठीक सकता है है, उसके पहले ये प्रॉब्लम okay. नहीं हो। Okay, ठीक है. So, Nishikant ji, what she's trying to say is that, the realities must have changed. The realities must have changed. So, the government thinks that these, facilities needs to be extended. It's not merely copying Aam Aadmi Party's manifesto or That's Aam Aadmi nice. Party's poll That's promises. nice. Our entire politics revolve around the idea that other parties recognize the reality. And the reality, if the Congress party has recognized that the reality has changed, then what AAP is doing is good. Instead of opposing the formulas and the policies of AAP, let us implement it. That's good for us. It's good for public. It's good for Karnataka and good for Himachal and Delhi. No more. At least we will be expecting Congress party to oppose our schemes. Now they will work on implementation, and that's good. What we are telling, even Arvindji telling, that we are not, challenging others for copying our ideas or schemes. Rather, we will encourage them. You also do it, and the public need it. जनता को जो चाहिए उसको मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस दे, आम आदमी पार्टी दे, बीजेपी दे. So that's good for us. There is no problem in that. So, since you have now accepted that it's good, and it's not merely copying Aam Aadmi Party's agenda. This brings us to a very, very important question, especially now with all the talks of opposition unity and taking on the might of BJP going into the election year of 2024. On one hand, the AAP accuses Congress of stealing its poll guarantees or election manifestos, and on the other, it says if opposition does not come together to fight 2024 Lok Sabha polls, there might not be an election in the country after that. This is, I'm quoting this statement from one of your very senior leaders. So he has said this. So on the one hand, when you are accusing the Congress of stealing your ideas, and on the other hand, you expect opposition unity. How is that possible? Do you think it will be possible? It's I think it has nothing regarding opposition unity and copying manifestos are not no way contradicts each other. Rather, it's paves the way for a common agenda. If my agenda is yours agenda, then the probability of coming together increases. And no, but you're accusing the Congress. You constantly, the senior leaders of your party, they're holding back-to-back press conferences in Delhi and saying, how it's our not ideas were stolen. it's not So one once way you're affair, accusing the Siddharth. Congress,
say that it's not one-way affair. Constantly, the day Bharatiya Janata Party came out with an ordinance to steal the power of Aam Aadmi Party government, mandated by the public of Delhi, and leader after leader repeating in Delhi that there's a fine. The state government should not have the power, and Delhi people should not, be given the power, the mandate. Then it's a bit horrific. The party which vouch for constitution, the party which says that we are, in India, the mark of democracy, they will be telling, they will be siding with BJP that it's okay with the ordinance that is stealing the power of an elected government and giving all the power to a selected government, the LG, and they are good with it. So how can, if we are talking of a authoritarian government in BJP, then how can you stand with BJP when they are applying the same method in Delhi? They are denying the rights of Delhi people. So when the Congress acts in its natural manner against the public mandate, then Aam Aadmi Party will be defending the interest of the public. There is no way. We are all for public interest. Whichever party will be against public interest will stand, will defend the public interest, will defend the Delight's interest, and after that, we'll see to it. So that was my question, Pratibha ji. If you want to respond to this, obviously you would want to respond to this. आप एक बार देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि the Congress has stolen ideas, and on the second they are saying that we have to come together for a unity. So how do you think, does it affect the overall glue that is supposed to bind the opposition? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट में हम एक दूसरे की विचारधाराओं के खिलाफ, मैनिफेस्टो के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केंद्र में जो आज वर्तमान में हालात हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का अधिग्रहण किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, तो पूरे देश में कुछ हमारी अपोजिशन में जो स्टेट में सरकारें हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सबके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल होते हैं। यदि हम सबको उन संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखना है, जिस तरीके से लोकतंत्र का खत्मा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, यदि किसी एक मुद्दे पे सारे संस्थाएं और सारी पार्टियां एक होती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यदि विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और हो सकता है प्रदेशों में हमारी सरकारें आपस में चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि दिल्ली वाले मुद्दे पर हम सब ने देखा किस तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन करते हुए उनको ट्रांसफर प्रक्रिया में बंदी करा जा रहा है, दूसरी चीजों को नहीं करने दिया जा रहा। तो ये केवल एक अकेले दिल्ली सरकार की कहानी नहीं है, ये इसके बाद मध्य प्रदेश में देखा, इसके पहले कर्नाटक में देखना, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा देश, जो मजबूत लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है। क्या कांग्रेस दिल्ली के जो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आएगा सर? ऑर्डिनेंस का हो, एलजी के मामले हो, एलजी का हर जगह हस्तक्षेप करना हो, he is asking a very interesting question. You need to respond. Pratibha ji, that will Congress come on board against the ordinance? देखिए, हम सीनियर लीडर्स ने जो फैसला लिया, हम लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं, हम उनके साथ रहेंगे। तो ये सारे फैसले वो रहेंगे, सोचेंगे और बताएंगे आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने कुछ क्लियर कट आंसर नहीं दिया, हाँ या ना। He told clearly that she will be I am not answerable for that. No, I am not responsible for that issue. My senior has decided that कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए तो position up till now the position is no. अब तक no है ना position. What is the position? What is the current position? के बारे में आप किसी सीनियर को फोन लगाएंगे, वो आपको बता देंगे क्या पोजीशन है। अभी तक तो जो है वो बातचीत चल रही है जी। अच्छा, so there is hope. Yeah, there is little hope. Okay. So yeah, Mr. Nishikant, would you want to respond to that? No, I am happy that the changing politics over a period of time has recognized the need to address the problems of the common man instead of jargons. So you may be thinking that these are mundane issues: water, electricity, bus fare, free bus ride, unemployment allowance. But that has captured the imagination of the country and the youth.
and the public. So all the political parties, it's not only Congress, it's BJP, it's other regional parties, they are working on it. And that's a good thing that for us, we have at least set the agenda for the political discourse in the country, that the common man's needs must be focused, addressed, and must be the central point in the agenda making process. So we are happy with that. And the rest of the discourse will be decided as it unfolds. I think very interesting scenario will be emerging in next couple of months in India, and for the opposition, there is much more to do and work. Okay, so thank you to all my guests today, Mr. Nishikant Mohapatra, Ms. Pratibha Raghuvanshi, and Ariba Khan, for joining the discussion and to actually, to helping us understand why these should not be limited to only pool manifestos. These are with the changing realities, with the changing political or economic situation. These are basically more of public goods, which all the governments should focus on. So thanks once again to all my guests. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.